के इसको किया हुआ है। अच्छा जी, बॉन्डिंग का हम देखते हैं हमने कहाँ तक किया हुआ है, फिर आगे निकलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कौन सा करेंगे? स्टेट्स ऑफ मैटर। ब्रांचिंग, condition for hydrogen bonding, okay. Carboxylic acid form hydrogen bonding, very good. Type of hydrogen bonding, very good. Intermolecular, importance of, very good. Okay, Alhamdulillah. Now today we will start new chapter, states of matter. Should I start new chapter or go to atomic structure past paper? It depends on you. Let's start states of matter, right? Okay. Will we do stoichiometry after this? Stoichiometry, I think in November we will start stoichiometry. Okay. Okay. Now states of matter. States of matter. Ibrahim, Assalamu alaikum. Sir. I am starting new chapter, states of matter, right? This is chapter number 3. Chapter number 3, states of matter. State of matter. Yes, what is matter? What do you know about the matter? What is matter? Matter is any substance with mass that takes up space. Okay. State of matter. Anything which has mass and volume. Anything having mass and volume. Anything having mass and volume. यानी हर वो चीज जिसके अंदर वजन होगा, वेट होगा, वो मैटर कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल a glass of water. A glass of water.
एग्जाम्पल आइस, वाटर, vapor. Vapor means in steam. So it means we have three states of matter. आपको मेरी बात समझ आती है? Yes, sir. We have three states of matter. Three states of matter. Three states of matter. वैसे तो 5 होती हैं, लेकिन आप इसको कह सकते हैं कि आपके कोर्स में 3 है. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. 1, 2, 3, 4, 5. Number 1 solid. Number 2 liquid. Number 3 gas. Number 4 is plasma, not in A-level syllabus. Number 4, Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate. सॉलिड एएस के सिलेबस में है, ये भी एएस में है, ये भी एएस में है. एक्स्ट्रा नॉलेज. एक्स्ट्रा नॉलेज. सो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 5 मैटर है, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ 3 है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Let's start from gas. Gases. गैसेस से स्टार्ट कर रहे हैं. गैसेस से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, define kinetic, molecular theory of gas. Define kinetic, molecular theory of gas. Define kinetic molecular theory of gases. आप में से कोई जानता है व्हाट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी? बोले. आप में से कोई जानता है व्हाट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी? Sir, is it when molecules have more energy and they move faster or something? सही है. देखिए, इस थ्योरी ऑफ काइनेटिक मींस मूवमेंट. काइनेटिक मींस मूवमेंट. काइनेटिक मींस मूवमेंट. तो मूवमेंट की जो थ्योरी है ना गैसेस की, वो कहलाती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. तो हम डिफाइन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस इससे स्टार्ट करते हैं. इसके 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 जो ईयर है वो मैं लिखवा देता हूँ, किस ईयर में आया हुआ है ये.
9701 9701 variant 22 October November 2009 2009 पॉइंट नंबर 1। अच्छा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि स्टेट बेसिक assumptions of kinetic theory of ideal gases, ऐसे भी आता है। नाउ फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एजम्पशन, गैस पार्टिकल्स आपको मालूम है घूमते रहते हैं इधर से उधर, इधर से उधर। अगर आपने कभी चेक करना हो तो आप देखें कि कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसका स्मोक मूव करता है। तो गैस पार्टिकल्स मूव रेंडमली, इधर से उधर, इधर से उधर। गैस पार्टिकल्स, लेट्स सपोज दिस इज कंटेनर and this is gas particle. So gas particle move from left to right and then move up. There is no specific pattern. There is no specific pattern. This is movement of gases. First move left and then moves up, then moves down, then moves up. This movement is called Brownian movement. Brownian movement. So gas particle move randomly. Their movement is Brownian movement. Zigzag, zigzag movement. Zigzag movement. So point number 1, gases particles move randomly. Gas particles move randomly. Their movement is called Brownian movement. यहां से वहां, here to there, this movement is called Brownian movement. बोले फर्स्ट पोस्टुलेट समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. देखिए उस साथ रिकॉर्डिंग हो रही है? Yes, sir, it's recording. ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गैस पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर। ये देखिए पोस्टुलेट नंबर 2, गैस पार्टिकल, लेट्स सपोज दिस इज गैस पार्टिकल। गैस पार्टिकल्स collide with each other. They collide with each other. Their collision is perfect elastic. Their collision is perfect elastic. ये देखें क्या मतलब है, क्या मतलब है भाई परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन का? लेट्स सपोज इधर काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल इज 5, लेट्स सपोज 5,
and here kinetic energy is 3. So sum of kinetic energy is 8. After collision, kinetic energy of this particle is 2 and kinetic energy of this particle is 6. Again, sum is 8. Such collision is called elastic collision. बात समझ आ रही है? Yes, sir. इसी तरह से मोमेंटम होता है. मोमेंटम फिजिक्स की चीजें. मोमेंटम टकराने से पहले बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन देयर मोमेंटम रिमेन सेम. So gas particles, point number 2. Gas particles collide with each other. Gas particles collide with each other. Their collision is perfect elastic. Perfect elastic means sum of kinetic energy and momentum is same before collision and after collision. This is perfect elastic collision. Elastic collision. Sum of kinetic energy and momentum before collision is equal to sum of kinetic energy and momentum after collision. This is perfect elastic collision. बोले बच्चों समझ आ रहे हैं? बोले ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो फर्स्ट पॉइंट जरा रिपीट करिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों. So the gas moves in Brownian motion and gas Very good. particles collide with each other. And their collision is perfect elastic. Yes. अगर पूछे व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन, फिजिक्स में पूछेगा, केमिस्ट्री में नहीं पूछेगा. तो इफ perfect elastic collision means momentum, sum of momentum and kinetic energy before collision is equal to sum of momentum and kinetic energy after the collision. Both, if both are same, it means perfect elastic collision. Point number 3. Now let's suppose this is container. Let's suppose this is container. This is container. In this container, we have gas particles. Let's suppose these are gas particles. So these gas particles collide with the wall of container. These particles collide
with the wall of container and exert pressure. That's why जब हम balloon को फुलाते हैं वो फूलता है, blow करता है. Why? Because gas particles collide with the wall of container and exert pressure. Collide with the wall of the container and exert pressure. Collide with the wall of container. This is wall. Wall of container. So point number 3. Gas particles collide with the wall of container and exert pressure बोलिए पॉइंट नंबर 3 समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Point number 4. As temperature increases, kinetic energy also increases. So kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. Absolute temperature means Kelvin temperature. Let's suppose, आपको ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है एंड पार्टिकल्स कोलाइड रैपिडली. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ पोस्टुलेट. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. अच्छा, मैंने आपको ये बात बता दिया. अच्छा, अब एक और है कि देखिए ये रहे गैस पार्टिकल्स. ये गैस पार्टिकल्स हैं. दिस आर गैस पार्टिकल्स. So gas particles are far away from each other. So they have no intermolecular force of attraction between molecule. There is no intermolecular force of. ये गलत है, होती है भाई. This postulate is wrong. So no force of attraction. No force of attraction. So gas particles do not have intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction. Gaseous particles do not have intermolecular force of attraction. बोले बात समझ आ रही है?
बताइए क्या ये पोस्टुलेट आपको सही लग रहा है? दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसमें अट्रैक्शन ही ना हो? No, sir. तो याद रखना, ये लिख लेना, लेकिन दिस इज रॉन्ग पोस्टुलेट. इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैसेस. अभी डिस्कस करते हैं व्हाट आर आइडियल गैसेस. आइडियल गैसेस आर दोज गैसेस which do not exist. Wrong postulate है. It is only applicable for ideal gases. आपको मेरी बात समझ आ रही है? There is no ideal gas in this Yes, universe. sir. So this postulate is only for ideal gases. Now point number 6. Point number 6. Gas particles have negligible volume, no volume, or negligible volume. Gas particles have no volume. Gas particles have negligible volume. बोले आपको बात समझ आ रही है? Yes, sir. क्या ये Yes. पोस्टुलेट सही है? बोले क्या ये पोस्टुलेट सही है? क्या किसी का चीज का वॉल्यूम जीरो हो सकता है? No. अगर वॉल्यूम जीरो हो गया तो वो मैटर नहीं रहा. मैटर नहीं रहा तो भाई इस चैप्टर में पढ़ क्यों रहे? दिस पोस्टुलेट इज रॉन्ग. इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैसेस. only applicable for ideal gases. Only applicable for ideal gases. बोले ये 5 पोस्टुलेट समझ आ गए? बोलो ये पांचों 6 के 6 पोस्टुलेट समझ आ गए? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. Next topic is ideal and non-ideal gases. Ideal and non-ideal. Non-ideal means real gases. Next topic is ideal and non-ideal gases. Ideal and non-ideal gases. तो लिखेंगे इसकी डेफिनेशन. याद रखिएगा हर वो गैस आइडियल गैस होगी जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के सारे एजम्पशंस को फॉलो करें. नंबर 2, आइडियल गैसेस वो गैसेस होती है जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, डेल्टन लॉ, ऑल गैस लॉस को फॉलो करें. सो आइडियल गैसेस आर दोज गैसेस which follow all assumption of kinetic molecular theory. Ideal gases are those gases which obey all gas laws like Charles law, Boyle's law, Avogadro law. आपको मेरी बात समझ आ रही है?
Yes, sir. So first point is ideal gases are those gases which follows which follow all assumptions of kinetic molecular theory. Kinetic molecular theory. बताइए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो पोस्टुलेट गलत थे कि नहीं थे? बोले काइनेटिक मॉलिक्यूलर Sir. थ्योरी के दो पोस्टुलेट गलत थे नहीं थे? लास्ट के दो. Yes, sir. Yes, sir. तो लिहाजा कोई गैस दुनिया में हो ही नहीं सकती जो सारे पोस्टुलेट को फॉलो करे. देयर इज नो आइडियल गैस. लेकिन हम कह सकते हैं नियर टू आइडियल गैस हो सकती है. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, नेक्स्ट sir. पॉइंट है ideal gases are those gases which follow all gas laws like Boyle's law, Charles' law, etc. आपको बात समझ आ रही है? Yes, sir. देखिए एक आसान सा तरीका है आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस को पहचानने का. आइडियल गैस जो होती है, बताइए कभी किसी को आइडियल मिलता है जिंदगी में? नहीं मिलता. क्योंकि आइडियल हमेशा दूर होता है. जैसे मेरा आइडियल अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो मैं उन जैसा बहुत दूर हूँ उन जैसे उनका. तो आइडियल गैसेस बहुत दूर होती है, उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं. सो लेट्स सपोज ये आइडियल गैस के पार्टिकल्स हैं, ये आइडियल गैसेस हैं, आइडियल गैस पार्टिकल्स. और ये रियल गैस पार्टिकल्स हैं. पता है कैसे करीब कर सकते हैं आइडियल और रियल गैस पार्टिकल्स को? बोले आइडियल गैसेस को रियल गैस कैसे बना सकते हैं? क्या करें कि पार्टिकल्स करीब हो जाए? हाउ कैन वी कन्वर्ट आइडियल गैस इनटू रियल गैस? Change state. सॉरी, Can't you like change the state? change the state. And how can we change the state? Gas into liquid like condensation. But you have two ways, right? When you exert pressure, particles come closer. So Yeah. when you exert pressure, particles come closer. Similarly, when you decrease the temperature, particles come closer. क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी. So ideal gas is far away particles. Real gas is near to each other. So next question is, how can we
convert ideal gas into real gas. So you have two ways. Number one, you have two ways. Number one, by increasing pressure, you can convert ideal into real. Similarly, by decreasing temperature, by decreasing temperature. अब बताइए, how can we convert real gas into ideal gas? By increasing temperature and decreasing pressure. Very good, very, very good. How can we convert real into ideal? Number one, by decreasing pressure. Number two, by increasing temperature. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Next is identification of noble gases or identification of ideal gases. Next heading is identification of ideal gases. आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडियल गैसेस. बताइए आपको जो आइडियल गैस पता हो, बताएं क्या दुनिया में कोई आइडियल गैस है? डू यू हैव एनी आइडियल गैस इन द यूनिवर्स? बोले ना कि कोई दुनिया में आपको ऐसी गैस नजर आती है जिसका वॉल्यूम ही ना हो. No, sir. So there is no ideal gas. There is no ideal gas. That's why we use near to ideal gas. Near to ideal gas. Near to ideal gas. बताइए वो कौन सी गैस है जिसमें बॉन्ड नहीं होता? हाइड्रोजन गैस में बॉन्ड होता है HH. बताइए वो कौन सी गैस है इन विच यू डू नॉट हैव एनी बॉन्ड? बोलिए कोई ऐसी गैस, नेम एनी गैस
which do not have bond. Hydrogen gas has bond. H2 is hydrogen gas. It has bond HH. Nitrogen gas is N2. It has bond. बताइए वो कौन सी Sir, गैस है sorry. जिसमें बॉन्ड नहीं हो. सॉरी, Sorry. क्लोरीन गैस में भी बॉन्ड होता है Cl2 Cl-Cl. Noble gases. नोबल गैसेस. हीलियम में कौन सा बॉन्ड होता है? हीलियम कोई बॉन्ड नहीं होता. जब बॉन्ड नहीं होता तो वो एक दूसरे के करीब नहीं आते. जब करीब नहीं आते, दूर होते हैं, इट मींस दे आर आइडियल. बोले आपको बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो भाई पॉइंट नंबर 2, नोबल गैसेस आर नियर टू आइडियल. noble gases are nearest to ideal gas. Nearest to ideal gases. बोले बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Because they do not have bond. Because they do not have any bond. The noble gases have only van der Waals force of attraction, but there is no physical bond, no chemical bond. Number 3, we have discussed hydrogen bonding. Can any one of you tell me, as the hydrogen bonding increases, particle come closer or far away from each other? As the hydrogen bonding increases, Closer. they come closer. Closer means ideal or non-ideal? Sir, non-ideal. Non-ideal. So always remember hydrogen bonding. Hydrogen bonding. If hydrogen bonding increases, if H bonding increases, gas particles come closer and become non-ideal. बोले बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. So next question. First question. Next question 9701. 22 May June 2004. 2004. Summer
Paper 2. Explain why ammonia is the most likely of these three gases to deviate from ideal behavior. So which these three gases? Ammonia, nitrogen and argon. So next question. Why ammonia is explain why ammonia is the most likely to have to deviate from ideal gas behavior. जी बोले why ammonia is deviate from ammonia. Other gases are other gases are ammonia, nitrogen or argon. Other gases are nitrogen, argon, ammonia. आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. बताइए इन तीनों में से कौन है विच फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग? Sir, ammonia. Ammonia. So ammonia form NH3 forms hydrogen bonding. Which attracts the molecules closer together. Closer together. So it deviate most. फर्स्ट पॉइंट अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट्स व्हाई इट डेविएट्स फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. बताइए नाइट्रोजन एंड आर्गन पोलर और नॉन पोलर? बोले Nitrogen is नाइट्रोजन और polar. आर्गन both are non-polar. If they are non-polar, it means they have van der Waals force of attraction because both are non-polar. So next point, nitrogen and argon both are non-polar. They have van der Waals forces. Now point number 3. Which one has more electron? Which one has more electron? Argon or nitrogen? Sir, argon. Argon has more nitrogen, more electron. Argon has more electron, more van der Waals than sodium, than nitrogen. Argon has more electron. That's why on second number argon and third number we have nitrogen. Argon has more electrons
I think 18. Argon has 18 electron. Then nitrogen. बताइए नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है आर्गन में? आर्गन। नाइट्रोजन होता है N2. आप काइंडली चेक करेंगे N2 में N2 का मतलब होता है नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं. 6। 7 प्लस 7 14 इलेक्ट्रॉन. आर्गन में कितने होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन. So which one has more electron? Argon has more electron. Point number next, more electron means more van der Waal. So it means ammonia, then argon, then nitrogen. So ammonia is more ideal, more deviation. Why more deviation? Because of hydrogen bonding. Nitrogen, less deviation. Less deviation from ideal behavior. Yes. बोले बात समझ आ रही है? Yes, sir. Next. State 2 assumption of ideal gas behavior. Next question. बोले स्टेट टू assumption ऑफ आइडियल गैस बिहेवियर. बोले ऊपर लिखा है मैंने. So they do not have आज the आप लोग molecular force of attraction. एग्जैक्टली ये पॉइंट लिखा नंबर 4, नंबर 5 है नंबर 6. These are two postulates. Gas particles do not have intermolecular force of attraction. आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो भाई gas particles do not have intermolecular force of attraction. Gas particles do not have intermolecular force of attraction. Gas particles do not have intermolecular force of attraction. They do not have any intermolecular force of attraction. बोले next point. No onion.
Sir, they have negligible volume. They have negligible volume. आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर, समझ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट यार। हम यहाँ तक पहुंच गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन था कि अब सही एक्सप्लेन व्हाई अमोनिया इज मोस्ट लाइकली आइडियल, ये हमने यहाँ तक कर लिया था। पता नहीं क्या मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। हमने लिख लिया था अमोनिया। हमें दोबारा क्वेश्चन उतारना पड़ेगा। वही क्वेश्चन है, दोबारा करेंगे। स्टेट टू assumption ऑफ ये आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट टू assumption ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। बताए पहला assumption हमने क्या लिखा था? Sir, they do not have intermolecular force of attraction. बिल्कुल सही है। देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही है। पॉइंट नंबर 1, देयर आर नो इंटरमोलिकुलर force of attraction. There is no intermolecular force of attraction between gas molecules. Between gas molecules. Point number 2, they have negligible volume. They have negligible volume. बोले यहां तक बात समझ आ रही है? Yes, sir. चलिए एक और क्वेश्चन करते। आइडेंटिफाई मोस्ट आइडियल and least ideal gases. Helium, ammonia, and nitrogen. Yes, which gas is more ideal? Here we have most ideal. Let's suppose here we have most ideal, and here we have least ideal. बोले which gas is most ideal? Sir, would
Yes, which gas is more ideal? Sir, ammonia. Ammonia is most ideal. I mean, ammonia is least ideal. Most ideal is helium, right? Helium, yes. All noble gases are real gases. They are most ideal, right? So noble gases are near to ideal. And which gas is least ideal? Sir, ammonia. Ammonia is least ideal. Why least ideal? Because of Because hydrogen. they have hydrogen bonding. And in the middle we have nitrogen. बता सकते हैं क्यों? बोले बता सकते हैं क्यों? Why ammonia is least ideal? Sir, because of the hydrogen bond. Hydrogen one. Hydrogen bonding. So ammonia has hydrogen bonding. More deviation from ideal behavior. Ammonia has hydrogen bonding, more deviation from ideal behavior. Point number two. Point number two. Helium has less electron than nitrogen. Hence, nitrogen has strong van der Waal forces. Hence, nitrogen has strong van der Waal forces due to more electron. So more deviation from ideal behavior. बोले बात समझ आ रही है? Yes, sir. सही. Yes, sir. नेक्स्ट इसके दो Sir? पार्ट हैं. एक न्यूमेरिकल होंगे, एक थ्योरी. आज मैं थ्योरी कर खत्म करा दूंगा, कल न्यूमेरिकल कराऊंगा. चलें आगे बढ़े. Sir? जी जी. Sir, I have a maths class in 10 minutes, so can I leave? At 2:30. Yes. After 10 minutes, right? Yes. After 10 minutes you can leave. Okay, sir. Okay. Now look at the graph. Next heading is graph and ideal gases. Yeah, graph for ideal gases. Let's suppose if you plot the graph, if you plot the graph between pressure volume, and here you have ideal gas, right? So
let's suppose this is negative axis, right? So let's suppose you have this gas. This is X gas. This is green gas. Let's suppose this is uh, Y gas. This is Y gas. And next gas is this is Z gas. Identify identity of gas. Identify gas. You have three gases: hydrogen, nitrogen, and NH3. Yes, which is hydrogen? X, Y, or Z? Yes. Which gas is ideal? Which gas is hydrogen? Sir, is it X? X. हाइड्रोजन बगैर कर्व के सीधा जाता है. अगर ऐसे जा रहा है, इट मींस हाइड्रोजन. सो X इज हाइड्रोजन. X gas is hydrogen. बताइए, which gas is nitrogen? Or you can say that which gas is more deviated? Yes, sir. Why? Y gas is more deviated or Z? Beta, which gas is more deviated? This is ideal. This point is Z is more ideal. deep. Z. Very good. Z gas is more deviated. So Z gas is ammonia. Now, which one is Y? N2. Y gas is nitrogen. Because it has weak van der Waal. It has weak van der Waal. बेटा कुछ पूछना है? No, sir. Now, gas loss. Next topic is gas loss. याद रखिएगा, इसमें 50% थ्योरी है और 50% जो है इसमें gas loss. First law is Boyle's law. Boyle', Boyle's law. First law is Boyle's law. Second law is Charles' law.
Charles law. Then last is Avogadro's law. So according to Boyle's, at constant temperature, volume is inversely proportional to pressure. जब भी इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं तो कांस्टेंट जरूर लिखना पड़ता है, एंड देन वी कैन रिमूव प्रोपोर्शनलिटी मार्क. यहां कांस्टेंट होता है के, सो पीवी इज इक्वल टू के. अगर हम गैस को का प्रेशर चेंज करते हैं P1 V1, इट इज ऑल्सो इज इक्वल टू के. P2 V2 प्रेशर चेंज करते हैं, वॉल्यूम चेंज करते हैं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू के. हम Pn Vn कोई भी प्रेशर कोई भी वॉल्यूम करते हैं के, इट मीन्स P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to dot 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 is equal to Pn Vn is equal to K. This is Boyle's law. This is Boyle's law. This is called Boyle's law. Boyle's law के 6 ग्राफ आते हैं. Boyle's law के 6 ग्राफ आते हैं. ये देखिए, पहले मैं कराऊंगा ग्राफ ऑफ Boyle's law. या चले पहले लॉ कर लेते हैं फिर ग्राफ करते हैं. Now Charles law. At constant pressure, चार्ल्स लॉ में है कांस्टेंट प्रेशर, volume is directly proportional to temperature. Again, remove the proportionality mark and introduce a constant. Constant is K. So K is equal to V over T. So for gas 1, V1 upon T1 is equal to K. For gas 2, V2 over T2 is equal to K. For N gas, Vn over Tn is equal to K. So formula of Charles law is V1 upon T1 is equal to V2 over T2 is equal to dot 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 is equal to Vn over Tn is equal to K. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Sir. किसका के? थोड़ा सा आगे कर देते हैं. अब आते हैं एवोगाड्रो पे. बेटा, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर. बेटे, आज रात को 10:30 पे आपकी पास पेपर की क्लास होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर की. 10:30 पे एटॉमिक स्ट्रक्चर की पास पेपर की क्लास होगी. पाकिस्तान के 10:30. हाँ, पाकिस्तान के. अगर ओके आप सर. फ्री हो तो ले क्लास लीजिएगा. फिजिक्स की टाइम पर. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको. ठीक है. ठीक है. Volume is directly proportional to number of moles. N is equal to number of moles. So V is directly proportional to N. V is equal to Kn.
So K is equal to V over N. So V1 over N1 is equal to K. V2 over N2 is equal to K. Vn over Tn is equal to K. So V1 upon N1 is equal to V2 over N2 is equal to Vn over T, Vn over Vn over Nn is equal to K. This is called एवोगाड्रो लॉ. फिजिक्स में भी आपने पढ़े होंगे ये लॉ. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. अच्छा, अब आपको डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के लिए डिफरेंट लॉ आपको आने चाहिए. ठीक है. एक लॉ आता है कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए डेरिवेशन नहीं आएगी, फॉर्मूला आएगा, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कैसे आया. तो कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स फिर हम करेंगे, ये सारे फॉर्मूले न्यूमेरिकल में आते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स, चार्ल्स एंड एवोगाड्रो. देखिए दोनों करते हैं. बॉयल्स ने कहा था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. चार्ल्स ने कहा था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. नाउ ऐड बोथ. V is directly proportional to T over P. So V is equal to KT over P. So PV over T is equal to K. So the new formula is P1 V1 T1 is equal to P2 V2 over T2. ये फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन नहीं है कोर्स का हिस्सा. एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बॉयल्स ने कहा था. चार्ल्स ने कहा था एट कांस्टेंट प्रेशर. बस ये लास्ट वाला करेंगे फिर आपकी छुट्टी. सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स ये आ गया. अब आएगा अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो. इनको ऐड करेंगे. ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब आप इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा V N T over P. So V is equal to K N T P. अगर P को वहां ले जाते हैं, PV is equal to N K T. So P1 V1 over N1 NT is equal to K. तो फॉर्मूला बनेगा P1 V1 over N1 T1 is equal to P2 V2 over N2 T2. क्या आपको ये फॉर्मूला समझ आया?
बोलें ये बात समझ आई है? Yes, sir. बस यहीं तक के रखते हैं। कल इंशाल्लाह अगली अब जो क्लास होगी इंशाल्लाह कल, तो उसमें जो है वो हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। प्लीज स्टेट्स ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना। और इंशाल्लाह 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 रात को 10:30 पे हमारी क्लास होगी पास पेपर जूम की। चलो, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. Office. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।